So, hello everyone. It's Dr. Dinesh, DEMS Pharmac faculty, and we have with us Dr. Nikhat Parveen. She has scored 161 marks in this July FMG exam. So, Dr. Nikhat, are you happy? Many congratulations. Finally. Thank thank you so much, sir. Yes, sir, I'm so glad. And so, first of all, I would like to congratulate. Thanks also DAMS team, DAMS faculty, so who helps me in this entire journey, sir. So really, this was very difficult, but really, sir, DAMS है तो मुमकिन है. These things, sir, I always remember, and I got passed today, and I'm so happy, sir. Many congratulations बच्चे बहुत बहुत आपको मुबारक and congratulations to all your friends, all your family, your parents. I hope everybody is very happy today, and this is one of the important day in FMG's life, because this is the first Yes, step in your life and you have yes, to see many more. Yeah, right? So बच्चे yes, sir. can you explain your journey little bit ki how you started this for this exam and how you able to complete this exam? Yeah, yes. First of all, I get to know about dams through my friends, sir, and then I joined, and I had a confidence that yes, if I will join, I can, because I've listened so many times about sir dams DFX, so I was more excited about that. But when I joined, actually, I was a online student only, but in during my whole preparation journey, so I was connected in live class like offline, and I Yeah, never missed the class. I remember. I have seen your messages. Yeah, you frequently asking the questions, and you Yes, were sir. having the doubts. So I remember your name. Yes, sir. And the best thing about dams is, I got answered whatever I had doubt immediately, sir. So I never feel like I'm a online student. I'm connecting live. So, and whatever the teachers guided me, I follow. First, in initial days that I go through my workbook notes. Really, that was more than enough for me. But for last year, you can understand, so that it was very difficult to manage whole syllabus, all 19. So I within before 10 days only I go through the DFX, and it helped me a lot, sir. चलो, So, बहुत so thank you. very good. Yeah, and Yes. can you tell me about your university also? Ki in which university you have studied? Because many of your juniors may be watching this interview later on, and they want to know ki how you passed all these things. Yes, sir, I'm passed from, sir, Kyrgyz State Medical Academy. It is in Bishkek, Kyrgyzstan, sir. And after that, I came to India and I joined DAM, sir. And today I'm here. I can still I'm not. Uh, I'm not believing that I'm here today, sir. Yeah. And So one thing is basically I just want to ask you कि बच्चे many students they get confused कि am I having the right choice? They get the fear कि am I missing something? So what advice you will give to them? Have you full trust, full confidence in the DEMS notes and DEMS so faculties? I listened you so many times. You said you attended our class, and you said us that बच्चे एक content पे trust करो, don't go on the another content. So I stick to this words only, sir. I always follow only one content, that is dance. And one more thing, sir. Multiple revisions of the notes. Yes, this helped me also. This helped me a lot in the exams, or whatever I marked, that was with the confidence that yeah, I'm marking it's true. And the keywords, keyword of the dams notes and workbook, it also helped me. It helped me a ऐसा lot लगा in the exam. कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ कि इफ बाई चांस आई मिस समथिंग ऐसा कभी बीच में लगा हो किसी फ्रेंड ने ऐसा बोला हो ऐसा कभी फील नहीं हुआ नहीं सर, ऐसा नहीं लगा सर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो सर मैं बहुत अच्छे से, इनफैक्ट सर अबाउट फार्मा सर, मैं जब क्वेश्चंस लगा रही थी, कुछ सम क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम सर डीएफएक्स, तो मुझे वो चीजें याद आ रही थी। आई वाज सो ग्लैड कि एकदम डायरेक्टली मिल गया वो। तो दिस वाज आल्सो पॉजिटिव थिंग्स फॉर मी इन द एग्जाम सर, कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द डीएफएक्स फ्रॉम नोट्स सर, तो वो इट मींस दैट वाज द बहुत। राइट अप्रोच
to, revise from the same notes again and again. Yes, And sir. uh, Same. Yes. DFX part was, And I think, clicked in your mind कि अब revision भी for इसी से करना है. yes, so for some subject I was a stick to only workbook notes, main notes, and for some subject in the last 10 days that I move on the DFX, which was very lengthy. It was difficult to manage with the main notes. Then I went to the uh, DFX notes only, sir. And And what about also I the remember what yes, yes. is continuous, please. And what about the, there are two parts in the exam, part one, part in the morning, then part two in the evening. So what thing comes to your mind when you were in the break? कि आपको क्या लगा कि अभी हो जाएगा कि अभी क्या करना चाहिए? वो that is the, So, right time to prepare for the second so part. about part one, sir, it was okay, little bit okay. So I can say, in part one, sir, I expected more from the PSM, but it was a little change there. And but however, I managed it okay. But when I opened the second sir, part, it was in first section. I missed 10 to 15 questions because all questions were lengthy, sir. और वो 50 minutes में सर वो मैनेज करना वो that was very tough. मुझे लगा कि अब वो मिस हो जाएगा. देन आई गॉट मार्क्ड ओनली रीडिंग सम वर्ड, सम मेन कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिया. छूट जाएगा नेक्स्ट 2 स्लॉट, आई विल गॉट 10 ना सर, तो वो मैंने पूरा मार्क कर दिया जल्दी. तो उसको लेकर के मैं थोड़ी सी लो कॉन्फिडेंट थी आने के बाद से कि क्या होगा. बट इतना था कि व्हेन आई गॉट द रिकॉल ऑन द डैम्स ग्रुप सर, देन मुझे लगा कि हो जाएगा. So that Yes, was sir. the right approach, कि घबराना नहीं है कि if by chance you are not getting, right answer in some of the question, by chance you have not read those हाँ topics, तो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रस्ट करना है कि अगला पार्ट इससे अच्छा होने वाला है और हाँ मे सर, बी वो नेक्स्ट ट्रस्ट कर. क्वेश्चन विल बी गुड. सो ओके, तो हाँ व्हाट सर. वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जिसमें लगता है ना कि ये तो इसको मुझे अच्छे से आता है? सो फार्मा तो हो गया था सर, फार्मा हो गया था मुझे तो. थैंक यू सर. सर फार्मा इतना इजी मैंने कभी फील नहीं किया था. ड्यूरिंग कॉलेज डेज इतनी पढ़ी थी, पर इस बार जो मुझे फार्मा समझ आया था सर बहुत अच्छे बच्चा से. तो बोलता है कि और फार्मिंग बहुत टफ है. नहीं सर, बट यू मेड इट इजी सर. सर आपका पढ़ाने का सर वो स्टाइल सर, इट्स ऑसम सर. आई हैव नो वर्ड टू प्रेज सर, रियली सर. थैंक इतनी यू बच्चा, थैंक डिफिकल्ट जो सर, जो इतने डिफिकल्ट सर ये सब्जेक्ट ये जो मानते हैं हम लोग सर, वो सर रियली इजी हुआ था. बहुत बहुत हेल्प किया था एग्जाम में. और सो सर एज आई अदर सब्जेक्ट, ऑलवेज यस, यस, यस प्लीज. other subject like sir OBG and also about Sumer sir, radio, ENT, this PSM also sir, PSM also, these all subjects. And I about Aptha sir also, I like when sir teaches us the clinical scenarios, especially with the videos sir, then I got all concept cleared ड्यूरिंग द क्लासेस. और वो बहुत इंटरेस्ट भी आती थी देख के वीडियोस की. हाँ थोड़ा सा जो वो एक डिस्ट्रैक्शंस होते हैं क्लास में, वो बच जाते थे डिस्ट्रैक्शंस होने से. वो कंटिन्यू एक प्रॉपर कंसंट्रेशंस बनते थे क्लास में कि हाँ सर कुछ अलग दिखा रहे हैं. तो वो एवरी टीचर चीजें इज भी बहुत यूनिक इन हेल्पफुल. टाइम्स. Every teacher Yes, is every teacher, unique. sir, every teacher, every faculty. About Patho also, sir. The DFX was awesome, sir. Awesome in last days, every subject, sir. सर बहुत अच्छी बात है बच्चे. तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली अगेन. एंड एंजॉय Yes, sir. दिस डे, एंजॉय, आने वाले कुछ दिन और एंजॉय करिए. एंड देन फाइनली आपको टारगेट लेके चलना है कि पोस्ट इंटर्न यू हैव टू क्रैक द नीट पीजी एग्जाम आल्सो. व्हाट इज योर Sure, फेवरेट sir. ब्रांच? कौन सी ब्रांच में पीजी करना चाहते हैं आप? Sir, I want to be a sir, neurosurgeon, sir. तो फॉर दैट यू हैव टू गेट द सर्जरी फर्स्ट. एंड सर्जरी इस बार Yes, थोड़ा sir, टफ भी आया surgery था. है then. आपने थोड़ा क्या टफ था sir? सर्जरी, बच्चा बोल रहा हाँ है कि सर थोड़ा. सर्जरी, हाँ सर्जरी टफ थी सर. कुछ क्वेश्चंस तो बहुत टफ थे, बट वो मैनेज हो गया सर. कुछ वो ऐसे क्वेश्चंस थे करेक्ट वाला, करेक्ट इनकरेक्ट, एंड सर इमरजेंसी मेडिसिन से सर ज्यादा क्वेश्चंस थे इस बार. तो करेक्ट इनकरेक्ट में ये थोड़ी टफ रही है इसको आप मैनेज करना, बट कर लिया सर. कर पाएंगे. अब आगे की जर्नी जो आपकी रहेगी वो भी डेम्स के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस श्योर सर, व्हाई नॉट सर, बिल्कुल.
चलिए, थैंक यू, थैंक्स बच्चे, एंड अगेन मेनी congratulations. I wish you good luck for your future. Take care. Bye bye. Yes, sir. Thank you so much. Okay.